पहनोगे नहीं, दुकान नहीं, वो तो है ही है, वो तो है ही है, लेकिन अगर जैसे अगर सेम लड़की सेम कपड़ा पहन के जिम में दिख जाए, वो कपड़ा जिंदगी में नहीं पहनेंगे। और ये एक नहीं 4-5 जगह से कंफर्म कर सकता हूँ, ऐसा हुआ है। तो तुम लोगों का बड़ा जी, हम लोगों का ब्रो कोड होता है, सब ब्लैक पहन जाते हैं वहां पर, बेचारे सब ब्लैक पहन चल रहे हैं। और मैंने एक पड़ी थी अंदर, ये तो ऐसे क्या, अंदर हाथ पांव मारता हूँ तो कुछ निकल आता है। अभी तो मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं, मतलब जो पड़े हुए बेचारे, नए के नए, पहने ही नहीं मैंने। तो मुझे तुम लोग कपड़े वपड़े गिफ्ट मत करना भाई, और प्रोटीन पाउडर गिफ्ट कर देना, सर लो, मिल के कर देना। हाँ, मैच पसंद है ना, 2 दिसंबर, कोई फायदा नहीं है ऐसे, हो गया सब, बुढ़ापा आ गया, अब क्या जन्मदिन मनाएंगे। तभी कैट दे रहा हूँ मैं। चलो, लेट्स स्टार्ट विथ रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन. Those who have missed this class can also go through this simple chapter, small chapter. Average समझ आया थोड़ा बहुत. What is ratio? What is ratio? It is, बोलो जिसने पढ़ा है, it is comparison of two quantities of same type. The comparison of two quantities of same type. That's called ratio. Also, it is the most reduced form of a fraction. Understand, you have to bring your fraction in the most reducible form. Then only you can say that they are in ratios, right? Now, what is the meaning of ratio? Let's try to understand this, right? If I say, let's say there are two numbers, one is a 10 and b is 6. So, if we write a by b or a is to b, both can be represented as ratio. A by b is what? 10 by 6. Here a is to b is what? 10 is to 6. But as I know that I can cancel it, so how much it is? 5 by 3. And here also a is to b is 5 is to 3. This is just a way of writing two numbers in the ratio, right? Now, if I say, right, see in this case I knew the number a and b, but you will not always know the number. That means if I have 10 by 6, the ratio is still 5 by 3, right? If I have, let's say, 15 by 9, the ratio is still 5 by 3. If I have 20 by 12, this is also what? 5 by 3. So if two numbers are 10 and 6, their ratio is 5 by 3, 15 and 9, 5 by 3, 20 and 12, that is also what? 5 by 3. So when I say two numbers are in the ratio 5 is to 3, suppose, right? So you take these numbers as what? हम लोग बचपन में कैसे करते थे? 5x and 3x. Why 5x and 3x? Because I don't know what is that number. In this case, if I multiply this with 2, you'll get 10 and 6. If I multiply this with 3, if I multiply this with 4, right? If I multiply this with 4, I'm still getting some numbers 20 and 12. I multiply this 3, I'm 15, 9. 2, 10 and 6, right? So हर बार अलग अलग नंबर मिल रहे हैं.
यहाँ पर हमको मालूम नहीं है कि वो नंबर कौन सा है जो हमने कैंसिल किया। यहाँ 4 भी कैंसिल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 4, दिस विद 3, दिस विद 2। यहाँ पर पता नहीं है, सो इसीलिए वी आर टेकिंग नंबर एज 5x एंड 3x। लेट्स से फर्स्ट number is 5x, second number is 3x, and then more information are given to you. Based on that, we'll solve the question. Clear? Okay. So ratio part is clear, right? Now see, now understand one thing also. If there are any two numbers a by b, and if I add some k to it, okay, if I add some k to it, so you will get a new number. You will get a new number. That will also be in some ratio. So whether the new ratio is greater than the original or original is greater than the new one, it all depends on A and B. All depends on A and B. So this new ratio will be greater than the original one, or this original is greater than the new one. It all depends on the value of A and B. For example, 3 by 2, and if I add 1 1 to it, it will become 4 by 3. 3 by 2 is 1.5, this is 1.33, so this is greater. And if I do ulta, if I take 2 by 3, and if I add 1 1 to it, so 3 by 4, 0.75, 0.66, so this is greater. Right? What exactly is happening? Everything is depending on A and B. So if in this case, if A is less than B, then new will be greater. And if A by B is greater than A by K plus B by K, if A is greater than. Right? This is the first thing. And second in ratio is the use of ratio scale and actual scale. I mean, first I told you that you can use the variable x and x, 3x, 5x to solve the question. Second is use of ratio scale and actual scale. ये बहुत काम की चीज है, ratio scale and actual scale. What is ratio scale and actual scale? Let's try to understand this. So, ratio scale and actual scale. Let's try to understand this with example. If salary of A and B are in the ratio 7:8, and total salary of A plus B, that means A and B together, is let's say 30,000. Then find the salary of A and B. Then find the salary of A and B. Find salary of A and B individually, right? So conventional method is let salary of A is 7x and B is, so now 7x plus 8x is how much? So 15x is equal to, x is equal to 2000, and A will be 7 into 2000, so A का कितना हुआ 14,000, B का कितना हुआ 16,000, right? Now there is something called ratio scale and actual scale.
On ratio scale, what is the salary of A and B? Right, add them. On ratio scale, it is how much? 15. On ratio scale, you write down their salary, add it, which is equal to 15. But on actual scale, their total salary is what? 30,000. So 15 and 30,000. That means I have to find out a number which when multiplied with 15, it gets 30,000. So 15 twos are followed by 3 zeros. Right, so this is called multiplying factor. This multiplying factor should also be multiplied here and here to get individual values. What is 7 into 2000? 8 into 2, 16,000. Understood? So one, this using of ratio scale. Second is in ratio scale only. I mean, you can solve most of the questions can be solved by using ratio scale. They divide 169 in the ratio by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4. Now, instead of giving you some integral values, they give you fraction, asking you to divide 169 in what ratio? 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4. Right, so let's say A, B and C are getting what? 1 by 2 is to 1 by 3 is to 1 by 4. Right. So first is to bring everything in integral form, take LCM of 2, 3 and 4. Take LCM of denominator. What is LCM of denominator? 12. 12, right? Then to find out the value of A, multiply 1 by 2 with 12, B 12, C 12. So 2, 6 are 12. So A 4 and 3. So what is A, B and C will turn out to be 6, 4 and 3. See this? Now this is on ratio scale, right? And there is something called actual scale. So on ratio scale, what is their sum? 13. But on actual scale, their sum is how much? 13 are, right? 169. So 6 into 13. 13 6 are 4 13s are 39. These are their individual values using simple ratio scale. Simple ratio scale, right? इसका यहीं से निकाल दो 2 3 कॉपी अगर निकल जाए तो ओके हाँ मतलब you have to divide 169 into 3 parts such that first half of first part and 1/3 of second part and 1/4 of third part all are equal. So if you take half of first part 39, 1/3 of second part, that means 1/3 of 52 is also, and 1/4 of 39. All should be equal. Okay.
Clear? Right? Okay. This is one thing, right? So in ratio mein, the ratio scale part is very important. Should know how to do it, right? Yeah. Okay. Second is, if I say, so one is this, previous we've discussed, and we can take 198. Question is divide 198 in the ratio 2:3:4. This is also simple, right? Let's say A, B, and C are three people. 2, 3, and 4 are the amount which is given on ratio scale. So you add it, how much it is? But an actual scale, the total sum is given as 198. 9 into 22. So 22 is your multiplying factor. So that same 22, you have to multiply with first, second, and third number. So you'll get individual values, right? Here. सेकेंड इज रेशियो एंड एवरेजेस थोड़े इजी चैप्टर हैं, मतलब आसानी से हो जाते हैं, क्वेश्चंस भी इजी हो जाते हैं, डायरेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होता है. सेकेंड इज proportion. Proportion is called equality of ratio. Right? Equality of ratios. That means when there are two ratios which are equal, then you say that they are in proportion. Example, if I take 10/6 and 5/3, see both of them are equal or not? Both are 5/3, 5/3, right? So when they are equal, two ratios are equal, they are said to be in proportion. Clear? They are said to be in proportion. Now, understand this. If A is to B is equal to C is to D, or A by B, if A by B is equal to C by D, then A, B, C, and D are in proportion. And if A, B, C, D are in proportion, so either you can write A by B is equal to C by D, or you can also write A is to B is in proportion with C is to D. Both are correct, right? In this case, A and D are called extreme values, and B and C are called mean values. And product of extreme is equal to product of mean. That means AD is equal to BC. Thank you. AD is equal to BC. तुम्हारे पास तो है ना रेशियो, पहले दिया था, नहीं भी तो बता देना. Clear? ठीक है मैम, एक वो दिया था और एक ये देता हूँ मैं. If A, B, and C are in proportion, if A, B, and C are in proportion, the three numbers are in proportion, then this is how you would write: A is to B is in proportion with B is to C. Right? Here A is called first proportional, B is called mean proportional, and C is called third proportional. Right? Here again B square is equal to AC. ये GP जब आएगा ना वापस से आएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन.
B square is equal to AC. B square is equal to AC. Right? Now, from here, there are actually 4 operations. 2 are very important and उसका combination भी important है. First is called dividendo. In dividendo, what you do? Sorry, componendo पहला वाला. कैसे भी लिख दो उसको. Is componendo. So what is componendo? You add 1 to both sides. It's called componendo, which simplify, this will become C plus D by D. Second is called dividendo. That means A by B minus 1, C by D minus 1 to both sides. So equality sign will remain same. This will become A minus B by B, C minus D by D. And third is componendo and dividendo. मतलब एक साथ लगा दिया. So when you apply componendo and dividendo together in this will turn out to be in this form. A plus B over A minus B, C plus D over C minus D. It's called componendo and dividendo together. Componendo and dividendo. Here, componendo and dividendo साथ लगा देते हैं हम लोग. ठीक है. बहुत rarely question has asked where you have to apply componendo and dividendo. तो proportion actually equality of ratio है तो उतना tough कुछ ऐसा रहेगा नहीं. proportion के तो questions भी नहीं आते. Ratios के question बहुत आते हैं. Different types of questions are there. Right? Note down this. Note down this. Okay. Take this off. Okay. There is one question I'll take. 60 liters of mixture contain 60 liter of mixture contain alcohol and water. In the ratio 4:1. How much water has to be added to make ratio 3:2? Right? How much water should be added to make the ratio what? 3:2. Now understand this question first of all. Your reference point, I'm just making a container, is 60 liters, right? What is the ratio of alcohol and water? Right? So I can find out the quantity of alcohol and water. कैसे? Alcohol, water, 4, 1, their sum on ratio scale is, actual scale is 5, 12, 4,
12. How much? 48. And 1 into 12, right? How much alcohol will be there? 48 liters. So alcohol is 48 and water is 12. Now understand this question. They are saying how much water has to be added. So simply adding water, right? Here you are adding 0 liters of alcohol and you are adding some water here. And when you are doing this, the new ratio should turn out to be how much? That means this 48 now will become 3 parts. 48 will become 3 parts. इसके बाद मैं continued ratio सिखाता हूँ, वो थोड़ा important है. So you'll get more detail about it. 48 is 3 parts. So 2 part will be equal to how much? If 48 is equal to 3 parts, so 1 part will be equal to 16 or not? 16 threes are right. So 2 part will be equal to, देखो ये 48 liters ही है, right? So 2 part will be 32 liters, right? उसमें से ऑलरेडी कितना था तुम्हारे पास और कितना ऐड करोगे तभी तो 32 होगा. So how much water is added? 20. I think this question number 15th or 16th in the worksheet. Check. Right? देखो हमारे पास कितना अल्कोहल है? ओके. वाटर एक्चुअल स्केल पे, राइट? रेशियो स्केल पे फाइनल अल्कोहल कितना है? वाटर, राइट? ये पार्ट है, राइट? हम लोग देते रेशियो स्केल पे अल्कोहल कितना है? 3 और वाटर कितना है? 2. विच इज इक्वल टू व्हाट? 5. और एक्चुअल कितना है? 60. तभी मिला हमको ऐसे. यस. सो 5, so 3, 2, 24 ऐसे. अच्छा कुछ और कर दिया क्या? सॉरी, वेट 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 वेट. How much is the alcohol and water in new? 3:2. That means their sum is equal to what? 5. But we don't know what is the total quantity because you are adding some water into it, right? Let's say water is x liters, so 60 plus x if you add it. So you don't know how much 5 should be multiplied to get 60 plus x. तो x मालूम ही नहीं है. तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी नंबर नहीं मिल रहा है, right? But tell me, you are simply adding water only. Alcohol you are not adding. That means alcohol will be 48 liters only. That means quantity of alcohol is already given as 48 liters. So 3 into how much is 48? So 2 into 16 is 32, right? 48 plus 32 is 80. 60 plus x. X is equal to, that means how much water is added? यहाँ पर देखो 48 है ना, ये निकल के रेशियो पे कितना पार्ट आ रहा है? 3 पार्ट. सो 1 पार्ट विल बी इक्वल टू व्हाट? 16. ये वाटर कितना है? 2 पार्ट. तो 2 पार्ट विल बी 32. राइट 32 हियर. उसमें से ऑलरेडी वाटर कितना है तुम्हारे पास? और कितना डालोगे? 20. 20 liters of water should be added. This then I'll teach you. आ रहे आंसर्स? थोड़ा कैट के चालू किया क्वेश्चन सॉल्व करना. बैठना, अभी कहाँ जाना है तेरे पास? जिम तो 7 के बाद जाना, 7:30 के बाद. अभी तो नहीं आया शाम को. कोई जिम में नहीं आ रहा है ना कोई ऐसा जिसके लिए जाना है? कोई ऐसा वहाँ आता तो नहीं है ना जिसको देख के मोटिवेशन आता हो जिम मार रहा है? फिर ठीक है. तो
तो 7:30 के बाद भी जा सकता है। हमारे जिम यूट्यूब चालू है, बाद में बताऊंगा। शॉर्ट सी बना देगा कुछ भी, गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं। एक चीज जो मैं पढ़ाता हूँ जो बहुत काम आती है, तो होता है कंटिन्यूट रेशियो। कंटिन्यूट रेशियो के क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं यूज हो ही रहा है, मतलब तुमने देखा होगा इतने सारे क्वेश्चन में कंटिन्यूट रेशियो आया है पहले भी कैट के, ठीक है। तो व्हाट इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर। कैट ने ऐसे क्वेश्चन पूछे 2024 में पूछा है, स्लॉट 2, स्लॉट 3 में पता नहीं। ओके, तो व्हाट इज कंटिन्यूट रेशियो। इसमें ना एक चीज कंटिन्यूट रहती है, मतलब इफ ए इज टू बी इज लेट्स से 2:3 एंड बी इज टू सी इज लेट्स से 4:5, ऐसा करके बोल दिया, राइट। फाइंड ए इज टू बी इज टू सी, फाइंड ए इज टू बी इज टू सी, फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। See this. If I have to find out A is to B is to C, I'll see that B is common in both, right? तो मुझे B इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि B का वैल्यू इक्वल नहीं है। To make B equal, cross multiply with the value of B with both ratios. So your A is to B will turn out to be how much? 8:12, and B is to C will turn out to be how much? 12:15. It simply means when A is 8, B is how much? 12. And when B is 12, C is how much? 15. A is to B is to C is how much? 8:12:15, right? 8:12:15. ठीक है. What if I extend, right? And means if I have A is to B is 1:3, B is to C is 2:5, and C is to D is 7:4, something like this, right? Then find the ratio of A is to B is to C is to D. 4 वाला कैसे निकालेंगे, ये समझ आ गया, फिर तुम सब निकाल लोगे। कैसे? Write A is to B is to C is to D. First you write it, right? Whenever 2 से ज्यादा दिया है तो पहला और लास्ट तो निकालना इजी होता है, राइट? तो टू फाइंड आउट द A, ऑल फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर, हाउ मच? is to B is to C is to, एंड D भी निकालना आसान होता है। D बेसिकली एक्चुअली स्केलिंग से हो जाता है, तो तुमको एक सिंपल बता दिया कि ऐसे याद रख लो, हाउ मच? 60। अब अंडरस्टैंड वन थिंग, राइट? या तो तुम लॉजिक लगाओ, लॉजिक मतलब रेशियो स्केल वाला कंसेप्ट याद रखो। इसका मतलब है कि व्हेन A is 1, B is 3, but A is 14, so B will be 3 times of that, which is 52. अब look at this, B is to C 2:5, right? मतलब जो B है वो 2 के बराबर है, लेकिन B यहां पर कितना है? मतलब 42 2 पार्ट्स के बराबर है। हमको 5 पार्ट्स निकालना है, पहले 1 पार्ट निकाल लो। 5 पार्ट्स, गुड। पहले आता है कोंगड़ी,
हो जाता। तो मैं भी सीखा, यही चीज सीख पाया मैं आके यहाँ। और भी चीज सीखा, बोल नहीं सकते क्लास। तुमको मालूम क्या लोग क्या सिखाते हैं, पहले ही जाते, तुम लोग मालूम कहीं जाते हो तो सब लोग दोस्त क्या सिखाते हैं सबसे पहले? तो पता नहीं, वो आदमी सीखता भी जल्दी है। स्ट्रेंज है, मतलब इस पे रिसर्च होना चाहिए, गाली क्यों सीख जाता है पहले, बाकी चीज नहीं सीखता, गाली जल्दी सीखता है। हाँ यार, मतलब है, सही बात है। ये लड़के ही हैं ज्यादा हर, लड़कियां नहीं, चाहे लड़कियां तो ठीक रहती, अभी थोड़ा थोड़ा भी खतरनाक हो गई हैं लड़कियां, फंसा ही देती हैं सीधे नीले ड्रम में, चल नीले ड्रम में, फिर शिलोंग ले जाके निपटा दिया, राजा की सोनम। क्लियर? कंटिन्यूटी रेशियो. So whenever we have a question of continued ratio, go and solve by this method. It's very easy. See, इसका यूज हुआ है, कैट में हुआ है, कंटिन्यूटी रेशियो बहुत आया है, लेकिन ऐसे नहीं आया कि डायरेक्ट ही आ गया, मतलब परसेंटेज मिक्स होके आ जाता है, ठीक है। एंड द प्रीवियस वन विच आई टोल्ड यू इज ऑल्सो देयर। मैं तुमको प्रीवियस वाले का एक कंसेप्ट सिखाया, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं एक 2024 का एक फटाफट एक क्वेश्चन लेता हूँ, आई थिंक स्लॉट 2 में था। खुला नहीं क्या है, 2024 स्लॉट 2। लास्ट ही क्वेश्चन था, this was last 19th question. See this, others also can see it, कान में लगाएं बाजा, वो निकाल के देख सुन सकते हैं। A vessel contains certain amount of solution of acid आणि water, आणि मतलब and 2 liters of water was added to it, the new solution had 50% acid concentration. When 15 liters of acid was further added, further मतलब उसके बाद और 15 लीटर ऐड किया to the new solution, the final solution had 80% acid concentration. So initially there is a vessel, that vessel has certain amount of acid and water into it, right? Acid and water. This quantity are not known to us. So let's say acid is x liters and water is 5 liters. Now when 2 liters of water is added to it, अब यहां से देखो क्वेश्चन तुमको देखना है, क्योंकि 2 लीटर ऐड किया, वाटर कितना ऐड कर रहे हो बेटा, 0 लीटर, एंड द न्यू सॉल्यूशन हैज 50% एसिड कंसंट्रेशन। 50% का मतलब क्या होता है, 50/100, विच इज 1/2। 2 टोटल है और उसमें से 1 कितना है, एसिड। अगर 1 एसिड है, नहीं होगा, अभी तो 2 हुआ, मतलब ये 1:1 हो जाएगा। यस, वो एसिड कंसंट्रेशन मतलब एसिड अपॉन टोटल, एसिड कितना है 50 और टोटल कितना है 100, 50/100 इज 1/2, तो एसिड 1 है और टोटल कितना है 2, नीचे टोटल है, तो अगर एसिड 1 है और टोटल 2 है तो वाटर भी कितना होगा, 1 ही 1 होगा, राइट? इट इज क्लियर? कैन वी से x इज नथिंग बट इक्वल टू y+2? ये x+0 मतलब x ही आएगा, y+2 ही आएगा, दोनों का रेशियो 1:1 है। इसको भी ऐसे लिख सकते हो ना, x अपॉन is equal to 1/1, which will give you x minus y is equal to 2,
Any doubt? Then they are saying when 50 liters of acid was further added, कितना ऐड कर रहे हो अभी एसिड और वाटर? एसिड कितना है x और कितना ऐड किया और वाटर कितना है y +2 तो ऑलरेडी इसमें वाटर में और कुछ नहीं ऐड करा y +2 ही रहेगा राइट. द फाइनल सॉल्यूशन हैज हाउ मच कंसंट्रेशन? अब देखो 80% का मतलब क्या होता है 80/100. 80/100 इज 4/5. मतलब एसिड कितना है 4 और वाटर कितना है 1. मतलब उसका रेशियो 4/1 हो जाएगा. तो एसिड कितना है अपना x + 15 और वाटर कितना है इसका रेशियो कितना है क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x + 15 4y + 8 x - 4y = -7 और 8. टेंथ में तुम्हें एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. उसमें तुम कुछ अच्छा लगे ना लगे लेकिन एलिमिनेशन बड़ा अच्छा लगता था. क्यों? क्योंकि तुम वहां से x को काट सकते थे. जिस जिंदगी में तुमने x को हरा दिया जीत गए. वहां पर x आता है या y भी कट कर सकते हो. मजाक के तौर पे अलग है. एनी वेरिएबल यू वांट यू कैन कैंसिल इट एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. y = 3 x = 5. सॉल्व करके आ गया यार. मतलब मैंने सॉल्व कर दिया मेंटली. अब क्वेश्चन क्या पूछा है x = हम y = 3 राइट एंड x = 5. x क्या था एसिड और वाटर कितना था नहीं y क्या था क्या रेशियो निकालना है वाटर एंड एसिड का रेशियो 3:5. इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन है 5/5:3. और गलती कहाँ होती है बताए लास्ट लाइन नहीं पढ़ने की. क्योंकि शुरू में एसिड टू वाटर बोला लास्ट में वाटर टू एसिड पूछ लिया. तो भावना में बह के बच्चे 5:3 मार्क करके आ जाते हैं. भावनाएं गलत हो जाती हैं एग्जाम के बाहर आते हैं कि भाई 3:5 नहीं 3:5 था. अरे ये सॉल्व करना है इक्वेशन सॉल्व करना आता है पक्का. y/x 3:5. अरे ये पूछा है वाटर टू एसिड. वाटर कितना लिया था हमने y और ये x लिया था. y का वैल्यू कितना है बेटा और ये 5. तो वो गलती मत करना ठीक है. अंडरस्टूड. डाल देना. पर 2-4 दिन से थोड़ा अच्छा हैप्पी हैप्पी फील हो रहा पता नहीं क्यों. नहीं मतलब नजर मत मार देना तुम लोग. सर क्यों खुश हैं जाके आज ही मैं बिल्कुल गुड़िया बनाता हूँ उसमें पिन चुभोता हूँ डॉल बना के. ठीक है. नाउ सॉल्व द वर्कशीट. करो अभी 1 घंटे का ब्रेक है तुम्हारा. मैं जरा जाता हूँ इंटीग्रेशन पढ़ाता हूँ.